Okay. Uh, okay. Right. Screen visible है सबके लिए? Yes, sir. Okay. So, so today we are going to review OTC medications. And if you look at the DHA syllabus, this is one of the very important topic that is separately mentioned apart from other different topics. Okay. Screen visible है सबके लिए? Yes, sir. Okay. Yes, sir. देखिए. So today we are going to review OTC medications. Sleepers. This is one of the very important topic that is separately mentioned apart from other. Okay. So, right. Okay. So we are going to discuss about different categories. Can you hear my sound? Yes, sir. Yes, sir. Sound. Thank you. Thank you. So today we are going to look at the different categories of drugs belonging to different medications. So we are going to focus on uh, what are the different categories, their classes, mechanism, indications, some common doses, side effects, and counseling tips. See, at least what I want at the end of this lecture is you have to know what is the drug and what it is used for. So you forget about the mechanism indication. At least you have to know what is the indication of that particular drug. So if I'm talking about drug, like you take OTC. analgesic drug, at least you have to know what is the category of that drug and what is the side effect and some little bit of counseling tips. So that's it. So I don't want to make it very much complicated. So so don't be scared by looking at the content of the slides. So it will be vast, but at least you have to pick at what is the important information, right? So we are going to cover about roughly like 1 or 4 essential over-the-counter drugs. So organized by these different therapeutic categories. So first we are going with analgesic category. Okay. So, analgesic category includes non-steroidal anti-inflammatory drugs, acetaminophen-based products, salicylates, and combination formulations. Okay. So the first one is NSAIDs. So here it includes ibuprofen, naproxen, aspirin. Okay. We also have acetaminophen-based products, Tylenol and their combinations, followed by topical drugs, which includes counter irritants as well as capsaicin. So first we'll talk with ibuprofen. So I so ibuprofen किस लिए यूज करते हैं? सबको पता है. तो Yes. ओके, हेडेक के लिए यूज करते हैं. अगर आपको दांत में दर्द आ गया उसके लिए भी यूज करते हैं. ओके. डिस्मेनोरिया इसे कहते हैं जब फीमेल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, इसलिए यूज करते हैं. आर्थराइटिस में यूज करते हैं, जॉइंट पेन्स में यूज करते हैं, मसल पेन्स एंड फीवर. ओके. इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. तो उसका डोज क्या है? सो यूजुअली 200 to 400 मिलीग्राम देते हैं. ओके. हर 4 से 6 घंटे के बाद देना पड़ेगा, एक टैबलेट लेना पड़ेगा, मगर उसका मैक्सिमम डोज से 100 मिलीग्राम पर डे. ओके. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, तो ये क्या करेगा? कॉक्स एंजाइम्स को इनहिबिट करेगा. सो एंजाइम्स को इनहिबिट करने से क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस क्या होगा? वो ब्लॉक हो जाएगा. प्रोस्टाग्लैंडिन जो प्रोडक्शन होता है उसका प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है. ओके. तो इसका काउंसलिंग टिप ये है आइबुप्रोफेन का. ओके. ज्यादा से ज्यादा जब आप ड्रग लोगे तो क्या होगा? आपका स्टमक इरिटेट हो जाएगा, जैसे स्टमक इरिटेशन. ओके. तो इसलिए हम कहेंगे आप तब भी लेते हो, आप फूड के बाद लियो, जब खाना खाने के बाद लियो और दूध पीने के बाद लियो, टू अवॉइड स्टमक अपसेट. ओके. राइट. And Yes. ibuprofen is contraindicated in patients suffering with peptic ulcer disease. So जिसमें भी like gastric ulcers होते हैं, peptic ulcers होते हैं, उनमें ibuprofen contraindicated है, हम यूज नहीं करना चाहते हैं. So this is the first drug, followed by naproxen sodium. ये दूसरा एनाल्जेसिक है. ओके. ये भी एनासाइड है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम है. ओके. राइट. Yes. Yes. एंड इसका इंडिकेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है.
तो मसल पेन में यूज करते हैं, जॉइंट पेन्स में यूज करते हैं, एंड स्पेशली मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में यूज करते हैं, एंड हेडेक को भी यूज करते हैं नैप्रोक्सिल सोडियम। ओके, तो इसका डोज होता है लाइक 220 मिलीग्राम्स ओरली एवरी 8 to 12 आवर्स, सो मैक्सिमम होता है 660 मिलीग्राम्स। ओके, सो वर्ड है। हम ये सजेस्ट करते हैं कि फूड के बाद लियो, तब भी आप फूड लेते हो उसके बाद लियो, एंड इट इज बेटर टू अवॉइड कंबाइनिंग विथ अदर एनसेड्स। तो ये ड्रग आप तब भी लेते हो, हम ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप दूसरे एनसेड से कंबाइन मत कियो, एंड द सेम अप्लाइज टू आइबुप्रोफेन, तब भी सी तब भी आप एक एनसेड लेते हो, अब दूसरा एनसेड से उससे कंबाइन मत कियो। Okay, so followed by we have another drug called acetyl salicylic acid. So acetyl salicylic acid इसे कहते हैं एस्पिरिन। स्प्रेन। Okay, इसके different combinations होते हैं. So aspirin is having different combinations. So you can combine aspirin with a diphenhydramine plus caffeine. Okay, कैफीन। okay. यस। You can combine aspirin with buffers and you can do plain aspirin. हम अक्सर जो है एस्पिरिन प्लेन लेते हैं। So इसका इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है एस्पिरिन का, ये जो कॉक्स 1 होता है, मैं कॉक्स 2 का बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कॉक्स 2 के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता है, मगर एक कॉक्स 1 होता है उसे इरिवर्सिबली बाइंड करता है। इरिवर्सिबली बाइंडिंग का मतलब क्या है? सो यूजुअली एनसेड्स जो है कॉक्स को बाइंड करते हैं, रिवर्सिबल फैशन में बाइंड करते हैं, यानी as long as the drug is present in our body, okay, it's going to bind with that enzyme. And once the drug is excreted, the enzyme is going to become free. Okay, and it's start producing prostaglandin synthesis. But whereas aspirin, what it does, it binds to the enzyme in such a way that it is irreversibly binding. Okay, it maximally it's going to kill the enzyme. Okay, again you have to produce new enzyme to produce prostaglandin next time. So this is what we mean with irreversible nature. Okay, so aspirin with a diphenhydramine plus caffeine. So why this combination is using for? So nighttime pain relief. Okay, so nighttime pain relief with sedation and enhance the analgesic action. अगर आपको पेन like आपको पेन रिलीफ जो होता है एनाल्जेसिक एक्शन, उसको एनहांस करने के लिए इस कॉम्बिनेशन को हम देते हैं। ओके, followed by we have same one. So it's the dose is like when you're looking at a plain aspirin, the dose is 325 to 650 milligrams every 4 to 6 hours. Okay. सर ये ब्लड थिनर में मतलब कैसे इन काम करता है एस्प्रिन? Depends on dose. Okay. अब तब भी count डोज। see depend on the dose. Okay. If you are या giving या low dose, for example 75 milligrams, it acts as like a blood thinner. If you increase the dose, okay, if you increase the dose like 325 milligrams, okay, instead of blood thinning activity, what it does, it's going to have पेन रिलीफ एनाल्जेसिक एक्शन। तो एस्पिरिन का ये मतलब होता है अगर आप कम डोजेस में दियो तो वो ब्लड थिनर के नाम करेगा। ओके, आप जब ज्यादा डोज दोगे लाइक 325 मिलीग्राम्स दोगे तो वो एनाल्जेसिक तरीके से काम करेगा। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन how much dose we are giving. So that is the reason why we give at low doses when you want blood thinning action, especially in those individuals who have some like cardiac related issues. So you want blood to be very thin. Okay. यस। तो इसका काउंसलिंग पॉइंट ये होता है एस्पिरिन का, अगेन एज इट इज एनाल्जेसिक, ओके, टेक विथ फूड. So if you are going with surgery to reduce bleeding risk, you have to stop 7 days before. यस। Right. Followed by, so combination analysis, combination products add caffeine, antihistamines or sedative for specific symptom relief. Okay. And, so acetaminophen, aspirin, caffeine, diphenhydramine citrate, all that stuff. Okay. So menstrual pain relief products, okay, like pamabrom, okay, pyrilamine maleate, acetaminophen, caffeine, ibuprofen, naproxen sodium, diphenhydramine. So जो सब फैमिली होते हैं इसका मिडल का फैमिली होता है। ओके, सो मल्टी इंग्रेडिएंट एनालिसिस भी बोलते हैं उसे बिकॉज वी कंबाइन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। सो स्पेशली मेंस्ट्रुअल पेन में भी हम दे सकते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज मेंस्ट्रुअल पेन रिलीफ प्रोडक्ट्स। सो एस्टामिनोफेन हो गया, ओके, पैमाब्रोम हो गया,
ओके, पायरिलामीन मैलिएट हो गया, इबुप्रोफेन हो गया, नैप्रोक्सिन हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं आप मेंस्ट्रुअल पेन में भी दे सकते हैं। सो एस्टामिनोफेन, सो एस्टामिनोफेन का मतलब क्या है? कॉमनली हमें क्या बोलेंगे इसे एस्टामिनोफेन को? पैरासीटामोल। पैरासिटामोल। एग्जैक्टली पैरासिटामोल बोलेंगे। तो एक किस तरीके से काम करेगा? तो मेनली पैरासिटामोल का एक्शन होता है अपने सीएनएस में काम करता है। ओके, यस। तो ये दो चीजें करता है, एक आपके पेन को कम करता है एंड आपके फीवर को कम करता है। मगर एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि इसका कोई एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं होता है। ओके, तो अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो गया, ओके, तो अगर आप पैरासिटामोल दोगे तो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट उस तरीके से वो काम नहीं करता है। इसका डोज होता है लाइक 500 to 1000 मिलीग्राम्स एवरी 4 to 6 आवर्स। एंड ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो मैक्सिमम डोज हो वो 4 ग्राम से एक्सीड ना हो। ओके, ओके, इट्स जेंटल ऑन द स्टोमक, आपके स्टोमक को इतना इरिटेट नहीं करता। मगर ये बात होता है कि तब भी इसका डोज ओवरडोज होता है तो आपका लिवर को इफेक्ट करता है, ये कॉज करेगा हेपेटोटॉक्सिसिटी। तो ध्यान रखना चाहिए कि ये जो भी 4 ग्राम से, इसका 4 ग्राम्स जो मैक्सिमम डोज होता है इसको मेंटेन करें। डू नॉट एक्सीड, डू नॉट गिव द ड्रग मोर देन 4 ग्राम्स। Okay, if you are giving that, you are going to make your liver toxic. You are going to damage your liver. Okay, so usually we say with every drug, not just with this drug, what are the counseling points? Avoid with alcohol. Okay, and don't combine with other acetaminophen containing products. Okay, like do not combine paracetamol with other NSAIDs. Now, सर, consider consider we had an individual. You have given the drug like 5 grams a day or 6 grams a day, like 8 grams a day. And what happens? There is overdose in that patient. पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी हो गया, तो आप क्या करोगे? एंटीडोट देना पड़ेगा। तो क्या एंटीडोट, एंटीडोट। यस। किस तरह का एंटीडोट दोगे? So we have an antidote for paracetamol toxicity. Okay, acetaminophen overdose. We call that एसिटा। N-acetylcysteine. Okay, क्या होता है इसका नाम क्या है? एन एसिटाइल सिस्टीन। ओके, तो पैरासिटामोल यस। प्रेगनेंसी में सेफ होता है एंड पेप्टिक अल्सर्स में भी आप दे सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। मगर बाकी जो एनसेड होता है वो पेप्टिक अल्सर्स में नहीं देना चाहिए बिकॉज इट्स गोइंग टू एग्रावेट द कंडीशन, राइट? फॉलोड तो बाय सर इसका 1000 mg आता है। 500 आता है, 600 आता है, डोलो में भी आता है। ओके, नहीं नहीं, 1000 mg भी आता है। तो उसमें रहता है सर 300 mg स्टैंड रिलीज। 300 mg यस। 300 mg इंस्टेंट रिलीज और 700 मतलब इंस्टेंट रिलीज करने सस्टेंड से मतलब क्या होगा? 300। यूजुअली आप क्या? 500 लेंगे तो अभी आपका काम चल जाएगा। इंस्टेंट, अगर इंस्टेंट लेने की भी आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो हाफ एन आवर में आपको एक्शन देखेगा, राइट? ओके, तो 1 ग्राम आता है लाइक पैरासिटामोल आपको अगर आईवी में देना हो तो। ओके, तो आपको उस तरीके से आएगा 1 ग्राम। टॉपिकल एनाल्जेसिक्स, काउंटर इरिटेंट्स, तो मिथाइल सैलिसिलेट, मेंथॉल एंड कैम्फॉर। तो बेंगे जो होता है इसका ब्रांड नेम है, यूजुअली हम इधर नहीं देखेंगे। ओके, यूजुअली वी सी दिस ब्रांड नेम्स इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। सो बेंगे जो इसका कॉम्बिनेशन है लाइक मिथाइल सैलिसिलेट है, मेंथॉल है, कैम्फर है, इसका जो 3 कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन में आएगा लाइक बेंगे, से बेंगे कहते हैं। ओके, so what are these products like benge contain methyl salicylate, menthol and camphor. कैंफर। So they act as counter irritants, like producing warmth or cooling that distracts pain perception. So ये तो टॉपिकल एनालिसिक्स है। तो आप ये तो नहीं ले सकते, ओरल रूट तो नहीं ले सकते। आप क्या करना चाहिए? यू हैव टू टेक दिस एंड यू हैव टू अप्लाई ऑन योर स्किन, बट नॉट ऑन वुंड्स। पेन। ओके, वुंड्स के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए, मगर आपको जिधर भी दर्द हो, ओके, उस जगह आप ये अप्लाई करना चाहिए। एंड आफ्टर अप्लाई you wash your hands. Okay, so capsin cream works differently. So let's stop. This is the second one, capsaicin. Okay,
So it works differently. What it does, it depletes substance P from nerve endings to reduce pain signal. So जो substance P होता है, like पेन को स्टिमुलेट करने में एक फैक्टर होता है, वन ऑफ द फैक्टर होता है सब्सटेंस पी. सो उसे क्या करेगा, वो सब्सटेंस पी को वो कम कर देगा. सो जब भी आप पेन का टेस्ट करते हो, इसका बारे में आपको पता चल जाएगा. ओके, डिप्लीट. सो द मैकेनिज्म इज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज डिप्लीटिंग सब्सटेंस पी फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स. सो तब भी सब्सटेंस पी का डिप्लीशन होता है तो क्या होगा, जो पेन ट्रांसमिशन होता है आपके ब्रेन को जाने का, जो पेन ट्रांसमिशन होता है उसे कम हो जाएगा. एंड लॉन्ग टर्म लेने से वो बहुत बेहतर होगा. ओके, सो विद रेगुलर यूज, सो इट्स यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ विद रेगुलर यूज. सो तब भी आप लेते हो, इनिशियली क्या होगा, आपको बर्निंग सेंसेशन होगा, मगर रिपीटेडली यूज करने से वो कम हो जाएगा. एंड कैप्साइसिन अप्लाई 3 to 4 times डेली फॉर सेवरल वीक्स टू सी रिजल्ट्स. आपको अगर रिजल्ट्स चाहिए तो आपको 3 to 4 times डेली अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, टू सी रिजल्ट्स. फॉलोड बाय टॉपिकल एंटीहिस्टामिन प्रोडक्ट्स. ओके, तो क्या है एंटीहिस्टामिन प्रोडक्ट्स, एक होता है डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड. ओके, सो टॉपिकल डाइफेनहाइड्रामिन विथ जिंक एसिटेट और कैम्फर, एक कॉम्बिनेशन है. ओके, gives mild analgesic and antipruritic effects. ओके, ये क्या करेगा, आपके H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा. तो स्पेशली हम जो डाइफेनहाइड्रामिन जो टॉपिकल है, हम इसलिए यूज करते हैं कि व्हेन यू हैव इंसेक्ट बाइट्स, एंड तभी आपको इंसेक्ट बाइट होता है एंड सीवियर इचिंग होता है एंड you have rashes, then you are going to use this product, topical antihistamine. Okay. Okay. Acetaminophen and diphenhydramine hydrochloride, or combination है Tylenol PM. Okay. Right. So the combination, see this combination, it relieves pain while helping sleep. तो आपको पेन भी रिलीफ होगा एंड आपको स्लीप भी आएगा. ये तो बेहतर कॉम्बिनेशन है. ओके, स्लीप सर, डाइफेनाइड्रामिन की वजह से स्लीपनेस आएगा. स्लीप, ये तो एंटीहिस्टामिन है. हाँ, एंटीहिस्टामिन है. यस. ओके, तो क्या करेगा डाइफेनहाइड्रामिन, क्या करेगा, ये तो हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा. ओके, यस. तो हिस्टामिन रिसेप्टर्स यस. को ब्लॉक करने से क्या होगा, सेडेशन होगा. तो each dose, see this combination, each dose contains how many milligrams of paracetamol? 500 milligrams 500 mg and 25 25. of diphenhydramine. तो हम जनरली इसे क्या इसे इसलिए ले रहे हैं, पहली बात अपना पेन को रिलीव करने में, एंड दूसरा आपको स्लीप हो जाने में. तो जनरली वी गिव एट बेड टाइम, सो आप बेड टाइम लेना चाहिए इस ड्रग को. ओके, तो अगेन द सेम थिंग, अवॉइड अल्कोहल. तो ये तो सब ड्रग्स के लिए होगा. एंड अदर सेडेटिव्स, स्पेशली इस ड्रग के लिए ये होगा. तो जो भी अदर सेडेटिव्स होते हैं, ओके, लाइक बेंजोडायजेपिन, लाइक अल्प्राजोलम है, वो एक अदर सेड लाइक बेंजोडायजेपिन्स होते हैं. तो आप वो उस बेंजोडायजेपिन्स को अवॉइड करना पड़ेगा, तब भी आप ये ड्रग लेते हो, बिकॉज डाइफेनहाइड्रामिन तो सेडेशन कॉज करेगा. एंड apart from that, Yes. and another sedative, you are going to have more sedation, more drowsiness. Okay, तो ड्राउजीनेस मोर होगा तब भी मॉर्निंग उठते हो. इट इज नॉट यूज्ड फॉर क्रॉनिक इंसोम्निया. ओके, क्रॉनिक इंसोम्निया के लिए तो हम इसे यूज नहीं करते. आई मीन when you are having a sleeping disorder, okay, what I want to say is like when you have difficulty in sleep, uh, and you are suffering with this from a very long period of time, then we do not prefer this drug. तो ये तो एनालिसिस कैटेगरी थी. तो एनालिसिस कैटेगरी हम क्या पढ़े थे अब तक, तो मोस्ट ओटीसी पेन रिलीवर. सी अब तक सी जो भी ड्रग में इधर डिस्कस किया था वो सब ओटीसी कैटेगरी ड्रग है. ओटीसी का मतलब ये होता है ओवर द काउंटर. ओके, आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आप नहीं. फार्मेसी जा सकते हो एंड वो ड्रग ले सकते हो. सो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं, आप हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पहले डॉक्टर से मीट होना पड़ेगा, एंड डॉक्टर आपका कंडीशन देखकर वो तब भी लिखेगा
वो पर्चा लेकर आप फार्मेसी गए तो वो मेडिकेशन देते हैं, तो उसे कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ओटीसी ड्रग्स वो drugs हैं जो आप यू कैन गो बाय योरसेल्फ एंड यू कैन टेक द ड्रग्स फ्रॉम द फार्मेसी। ओके, so most OTC pain relievers are NSAIDs or acetaminophen based. So most of the NSAIDs they block prostaglandin synthesis. So acetaminophen is not an anti-inflammatory drug, but it is antipyretic. It reduces your fever. Pyretic वो होता है, pyrogens वो होते हैं जो फीवर को कॉज करते हैं, तो हम क्या करते हैं इधर एंटीपायरेटिक देते हैं। ओके, तो एंटीपायरेटिक देने से क्या होगा, आपका फीवर कम हो जाएगा। एंड सैलिसिलिट्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये तो इरिवर्सिबल कॉक्स irreversible. they bind with your enzyme irreversibly. Okay, what I'm saying with aspirin at low doses, what it is acting as Antiplatelet. antiplatelet. Okay, it's Yes. acting as blood thinning effect, whereas at high doses it acts as analgesic, painkiller. The topical counter irritants like menthol, camphor, capsaicin, they act by sensory stimulation. So combination products add caffeine. Okay, now let's move to the second category, allergy and cold relief categories. So again, one second. Okay, so allergy and cold relief categories. So we have ibuprofen and pseudoephedrine hydrochloride. It's a combination. So ibuprofen inhibits COX enzymes and pseudoephedrine is a sympathomimetic alpha adrenergic agonist. तो तभी आप pseudoephedrine लेते हैं, क्या होता है आपके जो नेजल में जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं, तो कंस्ट्रिक्ट होने से क्या होगा, आपका जो भी कंजेशन होता है, जैसे कि स्पेशली साइनसेस में ज्यादा कंजेशन होता है एंड आपको सीवियर कोल्ड है, यू हैव सीवियर कंजेशन इन योर नोज, आपका नोज ब्लॉक होता है, तो उस नो को अनब्लॉक करने में हम क्या करते हैं, सूडोएपिनेफ्रिन देते हैं। सूडोएपिनेफ्रिन देने से क्या होगा, आपके नोज में जो भी ब्लड वेजल्स होते हैं, आपके नॉस्ट्रिल्स में जो भी ब्लड वेजल्स होते हैं वो ब्लड वेजल्स रिलैक्स होते हैं, तो रिलैक्स होने से क्या होगा, आई मीन सॉरी, कंस्ट्रिक्ट होते हैं। ओके, so your blood vessels in your nostrils, they are going to get vasoconstricted, and when they get vasoconstricted you have uh, unblock your nose, you can unblock your nose and that helps in congestion. तो इसके indications ये होते हैं like sinus headache, nasal congestion, fever, muscle aches and during cold. So when you are using the pseudoephedrine, always remember that you have to avoid this drug in hypertension. Why? Because you are constricting your blood vessels. Okay, so this is very important. Pseudoephedrine drug should always be avoided in hypertension, hyperthyroidism and heart disease. Okay, here there is another important point. See, we are discussing about drugs like OTC, over the counter, where you do not need any prescription, but in countries like UAE and in other Gulf countries like Qatar or anywhere, it comes under a category called controlled sales. So what do you mean by controlled sales? So a category hota hai controlled sales category. So here, what you want, like when you go to UAE and other Gulf countries, like you have taken this pseudoephedrine in India, okay, and you are going to travel to UAE. What you have to do is you have to have prescription from the doctor at least, okay, to use this drug there. Otherwise, they're not going to allow this drug. So it's very important to have the prescription when you're using pseudoephedrine in countries like UAE in other Gulf countries. Okay. So first generation antihistamine combinations. Okay. So diphenhydramine, phenylephrine hydrochloride. So the same indications होते हैं like common cold, allergic rhinitis, sinus congestion. See, first आप क्या देखना चाहते हैं? First आप drugs देखिए and indications देखिए. So this is enough. Okay. Followed by counseling. Okay. So what is a drug here? So we are talking about antihistamine combination. Antihistamine मतलब वो तो sedation cause करेगा, right? एक याद रखिए, साइड इफेक्ट होता है sedation. Okay. So diphenhydramine, phenylephrine, तो इसके इंडिकेशंस क्या है? कॉमन कोल्ड है, एलर्जिक राइनाइटिस है, साइनस कंजेशन होता है. ओके, so as it is having a sedative effect, what? Avoid driving. Okay, don't drive. And it is not recommended in glaucoma, benign prostatic hyperplasia, prostate gland जो भी like तभी बड़ा होता है, like especially in older males. Okay, do not use in them. For hypertension.
right? So do not use more than 3 days continuously for nasal congestion to avoid rebound. See, तब भी आप nasal congestions लेते हो, nasal decongestants लेते हो, ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप उन ड्रग्स को ज्यादा वक्त तक नहीं लियो, क्योंकि आपको rebound effect होता है. Okay, followed by second generation antihistamines like loratadine and pseudoephedrine sulfate. Okay, 1 second. Non-sedative. So loratadine and pseudoephedrine sulfate. Indications: seasonal allergic rhinitis with congestion, okay, sinusitis. So loratadine is a second generation antihistamine drug. It is non-sedative. Okay. Indications: allergic rhinitis. So multi-symptom cold products. So here, what we have done, we have combined products with dextromethorphan hydrochromide and paracetamol. ओके, तो जनरली यही होता है. तो तभी आप कोल्ड प्रोडक्ट लेते हो, आपको प्लेन प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा, आपको कॉफ रिलेटेड लाइक एंटी टर्सिव से कॉम्बिनेशन में मिलेगा, लेकिन और पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा. ओके, देयर इज अ कॉम्बिनेशन कॉल्ड सिनारेस्ट तो वही है. ओके, आपको एनाल्जेसिक या एनाल्जेसिक होता है उसमें, उसमें सीपीएम पीसीएम दोनों होता है, खुद भी होते हैं, से ट्रिपल कॉम्बिनेशन, राइट. यस. मैकेनिज्म क्या होता है इसका? एस्टामिनोफेन इट इनहिबिट्स प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सप्रेसेस कॉफ रिफ्लेक्स एट मेडुलरी सेंटर, फिनाइलफ्रेन किल्स vasoconstrictor. So the important thing here is avoid combining with MAO inhibitors, monoamino oxidase inhibitors. So why? Because there is a risk of hypertensive crisis. Yes. And do not exceed 4 grams per day, especially with paracetamol. So MAO inhibitors combinations से लेने से आप थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन बढ़ जाता है. ओके, फिनाइलेफ्रिन है ना इधर, ये तो वेसोकंस्ट्रिक्टर है. ओके, एंड क्या होगा अगर मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स लेने से? क्या होगा, आपका सेरोटोनिन भी, हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना, आपका सेरोटोनिन भी बढ़ जाएगा. एंड क्या होता है, नॉरएड्रेनालिन भी बढ़ जाता है. तो नॉरएड्रेनालिन बढ़ गया, क्या होगा, क्या होता है, आपके बॉडी में सिंपैथेटिक क्राइसिस होता है, इफेक्ट होता है. तो इसलिए सिनर्जिस्टिक इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम फिनाइलेफ्रिन हो और सुडेपिएड्रिन हो, हम मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर से नहीं लेते हैं. वी शुड अवॉइड दीस ड्रग्स, राइट. सो पीडियाट्रिक कोल्ड फॉर्मुलेशन, सो स्पेशली ये जो फॉर्मुलेशन इधर होता है, हम जनरली बच्चों में देते हैं. तो सो दीज आर द ड्रग्स. So antihistamine, decongestant, as well as antitussive combination. So this is the combination. We are having these combinations, especially given in pediatrics. So kids, right? So brompheniramine, it blocks histamine H1 receptors. So brompheniramine, it's going to block histamine H1 receptors. Phenylephrine, again, it's going to shrink nasal vessels. So dextromethorphan suppresses cough. It's an antitussive. So loratadine, it's a long-acting antihistamine, right? Antihistamine drug. Okay. So same thing. So these are the same drugs. Okay. So these are the same drugs. Keep in mind that avoid these drugs while driving. Okay. Avoid these drugs with other drugs that are causing sympathetic effects like monoamine oxidase inhibitors. Okay, so keep that in mind. Now, mast cell stabilizers. So we're having cromolyn sodium. Okay, क्रोमोलिन सोडियम क्या? cromolyn sodium. So especially ये ड्रग हम इसलिए लेते हैं तब भी आपको एलर्जिक राइनाइटिस होता है. Okay. So what this drug is going to do? It's going to prevent histamine release. आपके histamine release को block करता है. Okay, so cromolyn sodium generally हम ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेते हैं. So allergic rhinitis ट्रीटमेंट के लिए नहीं है.
मगर जो ये प्रोफिलैक्सिस के लिए, इट इज स्पेशली फॉर प्रिवेंशन। आपको जो एलर्जिक राइनाइटिस में जो सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स नहीं आने के वास्ते हम देते हैं। ओके नॉट ओके, आपको इमीडिएट रिलीफ तो नहीं आएगा मगर आपको देरी से इसका इफेक्ट देखेंगे आप। ओके, सो यू हैव टू यूज दिस सेवरल टाइम्स अ डे रेगुलरली। अगर आपको एलर्जन एक्सपोजर हो गया, ओके, आप एलर्जन एक्सपोजर, आप ऑलरेडी एलर्जन को एक्सपोजर हुए थे एंड आपको सिम्टम्स आ गए, तो ये ड्रग तो काम नहीं करेगा। तब काम करेगा तब आपका मास सेल स्टेबलाइज होता है। ओके, इट्स एक्चुअली अ मास सेल स्टेबलाइजर। मास सेल को स्टेबलाइज करेगा, इस तरह स्टेबलाइज करेगा तब भी एलर्जन आएगा एंड वो रिएक्शन करेगा, तो मास सेल रिएक्ट नहीं होता। ओके, इट डज नॉट रिलीज हिस्टामिन, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। So you can give this drug safely in children as well as pregnant women. So no problem. So complex cold combination. So इसमें क्या होता है? Like pseudoephedrine or phenylephrine, and you're going to combine them with other combinations. Dextromethorphan, So esto, acetaminophen. guaifenesin, diphenhydramine. Okay, Sudafed type. So ये तो अलग like branded type है. So these multi-symptom cold formulas. Okay, these multi-symptom cold formulas, they often combine decongestants, okay, antihistamines, right, and cough suppressants, right? So dextro and analgesics. So इसमें क्या क्या है? Decongestants है, antihistamines है, Jessica antihistamine. antihistamine, chlorpheniramine, okay, and cough suppressants and analgesics. So देखिए कितना complex combination है, right? So they treat all cold symptoms together, right? So counsel patients to check OTC labels carefully and avoid multiple products with similar actives. So तभी आप लेते हो, like अगर एक कॉम्बिनेशन है आपके पास एंड आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बाकी कॉम्बिनेशन आप जो भी लेते हो उसमें ये ड्रग्स मिक्स ना हो। अगर मिक्स हो गया तो आपको साइड इफेक्ट्स होंगे। See, the next one is zinc gluconate. Okay, not this one. Okay, so the same one. So this is one. So the next one is zinc for cold relief. Zinc interferes with so the first one is zinc gluconium and zincum aceticum. Okay, a brand combination name, especially in United States. So why we are giving zinc for cold relief? So zinc generally what it does, it interferes with rhinovirus replication. So जो भी ये वायरस होता है स्पेशली कोल्ड आने के लिए जो होता है, लाइक राइनो वायरस कहते हैं उसे। ओके, जिंक क्या करेगा, उन वायरस के रेप्लिकेशन से इंटरफियर करेगा एंड में शॉर्ट एंड कोल्ड ड्यूरेशन। ओके, सो दैट्स व्हाई what it is doing by interfering with the viral rhinovirus replication, it's going to decrease the duration of common cold. Common cold. So when do you want to start this zinc? Okay, it is best when you start at the first sign of symptoms. तब भी आपको लग जाए कि कोल्ड आ रहा है, okay, आपको सर जुकाम हो रहा है, तो आप then you start taking zinc. Okay, if you don't have any cold symptom and you don't have that feeling of being cold, then do not take zinc. Take zinc only when you have that sensation of getting cold. Okay, so what are the common side effects? पता है तब भी आप जिंक लेते हो, ये तो कॉमन साइड इफेक्ट्स है। एक होता है मेटालिक टेस्ट होता है आपका, आपका टेस्ट सेंसेशन बदल जाएगा, एंड दूसरा होता है नॉसिया, होता है सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग एंड नेजल इरिटेशन। ओके, सो अवॉइड जिंक जेल्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स। सो जो भी जिंक जेल्स होते हैं यू हैव टू अवॉइड दिस फॉर टेकिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स। क्यों? बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ एनोस्मिया। सो एनोस्मिया का मतलब क्या होता है? ओके, लॉस ऑफ स्मेल। आप स्मेल करने का जो होता है आप उसे खो जाते हैं, तब भी आप जिंक जेल लेते हो, नॉट जिंक टैबलेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जिंक जेल। ओके, Okay. ओके, जिंक जेल हो, नेजल स्प्रे हो, तो जो भी हो। ओके, followed by topical analgesics. Okay, we have done this. Okay, methyl salicylate, menthol and camphor. So methyl salicylate जो होता है ये भी prostaglandin inhibitor है। Okay, it's also going to block the synthesis of prostaglandins. Right, menthol and camphor, it activates thermoreceptors and distract. So this results is going to distract pain perception.
Okay, परसेप्शन right. So these are the पेन topical परसेप्शन कैसे से रिजेक्ट करें? thermoreceptors. थर्मोरिसेप्टर्स की वजह से वो मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा। Yeah, it's going to activate thermoreceptor. So generally pain receptors होते हैं ना, ये तो pain receptor नहीं है। हाँ। ओके, सो थर्मोरेसेप्टर्स वो होते हैं जो आपके टेम्परेचर के जो सेंसेशन करते हैं उस तरह के होते हैं थर्मोरेसेप्टर्स आपके, हम्म। या आपके न्यूरॉन में, स्पेशली सेंसरी न्यूरॉन्स में होते हैं। तो पेन रिसेप्टर्स होते हैं नॉसिसेप्टिव न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, तो इसके एक्टिवेट करने में क्या, उसी मेंथोल एंड कैम्फर जो कूलिंग इफेक्ट देता है, इसको एक्टिवेट करने में क्या होता है, तो आपका पेन जो परसेप्शन होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एक, आप प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं मिथाइल सैलिसिलेट देने से, सैलिसिलिक एसिड देने से, एंड दूसरा है आप इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने से आपको पेन जो होता है वो, उसका परसेप्शन यू आर गोइंग टू चेंज दैट। ओके, तो फिर ये तो स्किन रेड कर देगा। नहीं, ये तो रूबिफिकेशन नहीं है ना। ओके, oral ओके। cavity analgesic category. So, like especially when you have some dental problems, right? If you want to have that toothache relief, then you can give this oral cavity analgesic drugs, especially benzocaine products like Anbisol or some branded names. Combination person. Let's talk about that. So benzocaine and phenol. Once again, okay, benzocaine and phenol. It's a topical anesthetic and antiseptic. So what the benzocaine is doing here, benzocaine is blocking sodium channels to numb pain. So जो भी sodium channels होते हैं आपके न्यूरॉन में, उन sodium channels को benzocaine block करेगा। So किस लिए, किस इंडिकेशन में हम benzocaine दे सकते हैं, लाइक माउथ अल्सर्स में दे सकते हो, टूथ में दे सकते हो, sore gums and denture irritations. Okay, so benzocaine, menthol and dextromethorphan. So benzocaine anesthetic है and dextromethorphan antitussive। तो इन कॉम्बिनेशंस में देने से क्या होगा, ओके, आपका कॉफ भी ठीक हो जाएगा एंड अगर आपको टूथ पेन है वो भी ठीक हो जाएगा। अगेन, allow lozenges to dissolve slowly and avoid MAO inhibitors with dextromethorphan. Okay, you also need to avoid monoamine oxidase inhibitors with dextromethorphan antitussives. Same. So different combinations. Okay, that's why I'm skipping. So chloroseptic here, and we have another combination like ora gel, ora base. So topical antipruritic category. तो तभी आपको इचिंग होती है, ज्यादा इचिंग होती है, तब हम इन ड्रग्स को प्रिपेयर करते हैं, लाइक डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, जिंक एसीटेट और कैम्फर। ओके, सो हाइड्रोकॉर्टिसोल, इट्स अ लो पोटेंसी टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है जो अपने इम्यून सेल्स होते हैं उनको सप्रेस करता है। तो इस तरह करने से क्या होगा, आपका साइटोकाइन प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाएगा। ओके, एंड इवेंचुअली यू आर गोइंग टू inhibit the synthesis of prostaglandins as well. जनरली हाइड्रोकॉर्टिसोन हम एक्जिमा में देते हैं और डर्मेटाइटिस। ओके, एक्जिमा, एक्जिमा एक स्किन रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। ओके, लॉट ऑफ इचिंग, राइट, एंड इन दैट conditions you are going to give hydrocortisone, which is a low potency topical corticosteroid, and you can apply the cream, okay, 0.5 to 1% cream, like 2 to 3 times daily. Motion sickness. So motion sickness medication category. So antihistamines that suppresses vestibular stimulation to prevent nausea and vomiting. See, तभी आप see, there are some individuals like they have vomiting, especially when they travel, like in cars, okay, in buses, anywhere. So when they do traveling in vehicles, they usually have this sensation of nausea and vomiting. Okay, to treat that, what we give is meclizine. Okay, so meclizine as well as what is the other drug? Dimenhydrinate. Okay, so meclizine hydrochloride. Okay, cyclizine hydrochloride. So these are the antihistamine drugs. So they block H1 receptors. So when you're doing the blocking of H1 receptors, you're actually suppressing what? Vestibular stimulation in. So तभी आपका vestibular stimulation block होता है, तो आप
नॉसिया को प्रिवेंट कर सकते हो। तो जनरली डोसिंग इज 25 to 50 milligrams टेकन 1 hour बिफोर ट्रैवल। सो तभी आप ट्रैवल का प्लान कर रहे हो तो 1 hour बिफोर आप like 25 milligrams of meclizine ले लीजिए और साइक्लिसिन लियो। ओके, followed by dimenhydrinate. The brand name is Dramamine. So हाँ it works similarly like meclizine or cyclizine. So the dose here is 50 to 100 milligrams every 4 to 6 hours. So the maximum dose is 400 milligrams per day. So the side effects are drowsiness, dry mouth, urinary retention. See, आप ये एक word याद रखिए, motion sickness. That's it. So what are the motion sickness drugs? Meclizine, cyclizine, and dimenhydrinate. So these are the three. डायमंड। Okay, right? यस So these are the three drugs you have यस। to remember. Meclizine, cyclizine, and dimenhydrinate. What do you mean by motion sickness? Motion sickness means having that sensation of vomiting, like during travel. It's not with everyone, but individuals. Okay, right? सर देख के दूसरे को हो जाता है। सही है। अब क्या कर, तब हम कुछ नहीं कर सकते। Okay, you have to close your eyes. So cold sore medications. So cold sore medications, antiviral and symptomatic relief products for herpes simplex labialis. Okay. So पहला ड्रग होता है डोकोसैनोल, ब्रांड नेम इज एब्रीवा। तो ए ड्रग है, ओके, एंटीवायरल ड्रग है दैट ब्लॉक्स। ये सब ब्रांड नेम सर जो है ये तो यूजुअली गल्फ में यूज होता होगा ना। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। डीएचए के लिए तो जरूरत नहीं है ब्रांड नेम से, स्पेशली लाइक ओएमएसबी तो पूछते हैं। हम्म, या नहीं गल्फ में कहीं भी गल्फ कंट्री में यूजुअल होता होगा। प्रैक्टिसिंग आपको जरूरत है, मगर मैं एग्जाम के पॉइंट हम्म ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरत नहीं है, मगर प्रैक्टिस में तो यूज होगा। ओके, मोस्टली ओके ब्रांड नेम से ही होगा। हाँ, हाँ ओके, जैसे कि टाइलिनॉल है। ओके, वो तो टाइलिनॉल से बुलाएंगे थोड़े ड्रग्स को लाइक स्पेशली देयर ब्रांड नेम से बुलाते हैं rather द मेन ड्रग। ओके, तो एब्रीवा है, ये तो पहला ड्रग है डोको कोल्ड सोर मेडिकेशन को डोकोसेनोल है। तो ये क्या करेगा, इट इनहिबिट्स फ्यूजन ऑफ व्हाट, एचएसवी, herpes simplex virus यस with host cells। तो अगर फ्यूजन नहीं होता है तो वो तो वायरस अंदर नहीं जाएगा होस्ट सेल के अंदर, तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। एंड देयर इज अ फास्टर हीलिंग ऑफ कोल्ड सोर्स। तो जनरली आपको पता चलेगा, सी मैं तब आपको याद होगा मैं जब एंटीबायोटिक्स डिस्कस कर रहा हूँ तो इसके बारे में बोला था, लाइक herpes simplex रिलेटेड यू आर हैविंग कोल्ड सोर्स, ब्लिस्टर्स जैसे आप, यस या ब्लिस्टर्स जैसे आपको लिप्स के पास हो, फेस के ऊपर आ जाएंगे। ओके, ये टॉपिकल इन्फेक्शन है herpes simplex का। जेनिटल इन्फेक्शन भी होगा, आपके जेनिटल्स के पास, आपके पेनिस के पास हो, उधर भी आपको ब्लिस्टर्स होगा अगर इस इन्फेक्शन के अगर आप इफेक्ट हो गए तो। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट मैं बोलता हूँ। सो डोकोसेनोल वो एक ड्रग है जो herpes simplex labialis, स्पेशली जो आपको ब्लिस्टर्स होते हैं, कोल्ड सोर्स होते हैं आपके लिप्स के ऊपर, आपके फेस के ऊपर। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट ये है। ओके, सो 10% ट्रीटमेंट यू हैव टू अप्लाई 5 times daily until healed। ओके, तो तो 10% क्रीम में क्या रहेगा सर? वो 10% क्रीम में अदर एक्सीपेंट्स भी रहेंगे। ओके, हम्म ओके, मेन ड्रग तो डोकासोनोल रहेगा अलॉन्ग विथ तो अदर। कुछ बोल रहा है। हाँ, ओके तो ये क्या करेगा, जो हीलिंग टाइम होता है स्पेशली जो कोल्ड सोर्स का, वो हीलिंग पीरियड को कम कर, आई मीन इट शॉर्टन्स द हीलिंग टाइम। तो आप जल्दी हील होते हो तभी ये ड्रग लेते हो डोकोसैनोल। See, followed by the other drugs for cold sore medications like menthol, camphor, alum, and salicylic acid. The brand name is Carmex, lip balm कहते हैं उसे। ओके, तो ये क्या होगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। They soothe, exfoliate, and protect lips. Okay, you have to apply thinly, not on open or bleeding lesions. तो तब भी लीजन अगर लीजन ब्रेक हो गया तब you should not apply that। Okay, apart from that, intact, अगर ब्लिस्टर इंटैक्ट है, कोल्ड सोर इंटैक्ट है, तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं।
Followed by the other category, I mean the other medication group is benzyl alcohol and benzocaine. The brand name is Zilactin. तो ये क्या करेगा, पहला आपका पेन को नम करेगा, okay, by blocking nerve conduction, and it provides mild antiseptic action. You have to apply 4 times daily. So the same thing. Weight management category. Okay. So there is one drug called orlistat. Okay. So the class it belongs to is gastrointestinal lipase inhibitors. तो क्यों लेते हो ये ड्रग orlistat? किस लिए लेना चाहिए? आपको वेट रिड्यूस करने के लिए. ओके. सो जनरली ओबेसिटी में हम क्या करते हैं, एक ड्रग प्रेफर करते हैं लाइक orlistat. सो स्पेशली फॉर वेट लॉस इन ओवरवेट एडल्ट्स. तो जिनमें भी बीएमआई मोर देन 25 होता है, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हो तो आप ये ड्रग लेते हो orlistat. द ब्रांड नेम इज अलाइव. तो इसमें डोज आता है 60 मिलीग्राम कैप्सूल 3 टाइम्स डेली. ओके, with meals containing fat. So generally you have to take this drug with meals that contain fat. Okay, and avoid high fat meals. Like do not take this drug with milk or I mean high fat milk or like high fat diet. Okay. So तो सर यहाँ तो फिर कंटेंट भी कर रहे हैं फैट. yeah, टेक विद मिल्स दैट कंटेन फैट. yeah, you have to और avoid. यहाँ अवॉइड भी कर रहे हैं. Yes, you have to avoid that. So generally we have to decided because side effects. You can take that, but the problem is you are going to have side effects. Okay, and one you are going to affect the absorption. ये तो properly absorb नहीं होता है, तब भी आप उतना high fat लेते हो. It's better to avoid high fat meals, right? So that's very important. Followed by UTI analgesic category. Like we are having phenoxypyridine hydrochloride. The brand name is Azostandard. Okay. It exerts local analgesic effect on urinary mucosa, reducing burning and urgency. See, अगर individual को cystitis हो जाए, urinary infection, and you have severe pain, okay, while urinating, and severe burning sensation. तो उस तरीके के पेन को जो जिसमें यूटीआई में जिस पेन आता है और बर्निंग सेंसेशन होता है, अगर उन पेन को कम करना चाहते हैं तो फिनाजोपिरिडीन हाइड्रोक्लोराइड लेना पड़ेगा. द डोज इज 100 to 200 milligrams orally 3 times daily after meals. Okay. Followed by nasal decongestant category. We already have seen this one. Okay. Sodium chloride. Class is saline nasal moisturizer. Okay. So dry nasal passages. See, if you're having mild congestion, so generally we do. You can see everyone can do this by taking saline and pumping the saline water in one nostrils and taking out from another. Okay, we call it as saline pumping. Right? We can do that by using sodium chloride. Essential minerals and supplements. Moving into nutritional supplements and gastrointestinal health products. So first one is calcium citrate, followed by calcium carbonate. So these calcium and magnesium sulfate, especially we take for bone health, आपका bone health अच्छा होने के लिए, and muscle function and mineral deficiency prevention. Okay. So we are having different combinations here like calcium citrate alone combination, calcium carbonate alone combination, and magnesium with calcium. So it's a combination therapy. So calcium citrate, especially for bone mineralization. Okay. आपके bone health के लिए हम लेते हैं. Okay. So usually what we prefer, taking calcium with vitamin D for better absorption. So vitamin D क्या करेगा, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैल्शियम को अब्सॉर्ब अच्छी तरह से करता है vitamin D. So we prefer this combination. And we avoid taking calcium with iron, tetracyclines or bisphosphonates. Why? Because calcium is going to form complexes with tetracyclines and other drugs.
Okay, so we do not take calcium with iron or tetracyclines or bisphosphonates, like alendronates. So these are another category of drugs. Okay, especially used for osteoporosis. So we avoid Yes. taking calcium with iron or tetracyclines and bisphosphonates. Followed by the second one is calcium carbonate. Okay, side effect is constipation. So ज्यादा लेने से क्या होगा कैल्शियम, ओके, आपकी किडनी में कैल्शियम स्टोन्स फॉर्म होते हैं, तो ज्यादा भी नहीं लेना, जितना लेना चाहिए उतना ही लेकर हम उसको स्टॉप करना चाहिए. So do not exceed more than 200 milligrams per day. Okay, avoid excessive milk or vitamin D intake because it causes a syndrome called milk alkali syndrome. So when you're taking calcium, you have to avoid milk. Okay, excessive, not, see, I'm not saying the normal intake, but taking milk, excessive milk with calcium tablet, okay, that's going to cause milk alkali syndrome. So magnesium chloride and calcium. So this is another combination where we give calcium with magnesium. So usually we give magnesium for when the individual is having magnesium deficiency, right? So magnesium supplementation reduces muscle cramps caused by PPIs or diuretics. So generally क्या होता है, PPIs प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और डाययूरेटिक्स लेने से क्या होता है, मैग्नीशियम तो डिप्लीट हो जाएगा, आई मीन मैग्नीशियम ज्यादा से ज्यादा बाहर एक्सक्रीट होगा, एंड एक्सक्रीट होने से क्या होगा, आपको मसल क्रैम्प्स आएंगे, तो मसल में पेन्स आते हैं. तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन देते हैं, तब भी हम डाययूरेटिक्स यूज करते हैं और PPIs यूज करते हैं. ओके, so we have to avoid magnesium with severe renal impairment. See, not just magnesium, even with calcium or anything. So when you are taking this drug, generally when you are having renal failure, आपका किडनी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम को अवॉइड करेंगे और कैल्शियम को अवॉइड करेंगे. Followed by the other category is stool softeners और laxative category. तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, आपके स्टूल को सॉफ्ट करते हैं. किस तरह सॉफ्ट करते हैं, by allowing water and fat penetration, right? Okay, तो उनमें पहला होता है डॉक्यूसेट सोडियम, which is a stool softener. They're having another one called bisacodyl. Okay, ये क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन मूवमेंट्स को स्टिमुलेट करता है. तो लैक्सेटिव का मतलब क्या है, लैक्सेटिव का मतलब ये होता है, आपका क्या होता है, आपका इंटेस्टाइन का मूवमेंट ज्यादा होता है एंड यू हैव स्टूल. सो व्हेनेवर देयर इज लाइक कॉन्स्टिपेशन, स्टूल बाहर को आने में डिफिकल्टी होता है, तो हम लैक्सेटिव्स देते हैं, स्टूल सॉफ्टनर्स देते हैं. ओके, तो स्टूल सॉफ्टनर्स क्या करते हैं, they are going to see the stool which is very hard, they are going to make it watery. Okay, right? And what the stimulants are doing, like bisacodyl हो, senna हो, ये क्या करते हैं, आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को फास्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं. First one is docusate sodium. The brand name is Coles. Okay, so the mechanism here is it lowers surface tension of stool, allowing water and fat to penetrate. So intestine में जो stool आता है, उनमें fat को water को penetrate करते हैं into the stool, so that it becomes soft. So indications, so तब भी constipation हो, okay, और post operative or postnatal stool softening. Okay, the dose is 100 milligrams capsules, 1 to 2 times daily. So we have to take this with full glass of water. Okay, you can safely give this drug in pregnancy and long-term use, and avoid with mineral oil, because we are taking with that, there is increased absorption and that causes toxicity. The second one is bisacodyl. Okay, brand name is Dilcolax, okay, which stimulates intestinal movement. So usually the onset is, see, when you take this drug, the action to show by this drug, it takes like 6 to 12 hours. Okay, so but when you give rectally, तब भी आप रेक्टम के जरिए देते हो, तो वो फास्ट होगा, एक्शन फास्ट होगा, like 15 to 16 minutes में आपको एक्शन दिख जाएगा. Okay, so we have to avoid this for long-term use, because that makes the person dependent on this drug. So this is the end of this lecture. So as far as for the today discussion is concerned,
and we will discuss the remaining OTC medications in the tomorrow class. Okay. So if you have any doubts, we have the discussion. सर Yeah. जो आयरन और कैल्शियम दे रहे हैं Yeah. तो दोनों एक साथ नहीं दे सकते हैं, नहीं दे ठीक है, सकते. बट टाइमिंग तो Yeah. अलग अलग हो सकता है ना. Timing can adjust. Like if you are giving iron, you can give like 2 hours prior. 2 घंटे के पहले दे सकते हो कैल्शियम से पहले. अगर कैल्शियम ले लिया तो like 3 to 4 hours वेट करियो. Okay. So you can adjust the तो time. प्रेगनेंसी में तो सर यही चलता है ना, कैल्शियम आयरन, तो एक मॉर्निंग डोज एक इवनिंग डोज, सही है. राइट. आयरन लेते हैं मॉर्निंग लेते हैं अगर नाइट टाइम लेते हैं. कैल्शियम तो दोपहर में लेते हैं, आफ्टरनून वक्त में लेते हैं. ओके. दो भी साथ में नहीं लेते हैं. ओके. तो प्रॉब्लम ये होता है आयरन लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है. ओके. एंड दूसरा ये होता है आपके दांत, आपके टीथ होते हैं ना, उसके ऊपर उसका कलर चेंज, मार्क्स पड़ जाते हैं. ब्लैक ब्लैक हो जाता है. हाँ, ये तो आयरन है, एलिमेंटल आयरन है ना, तो टीथ को डैमेज करता है वो. ब्लैक हो जाता है ना, ब्लैक ब्लैक. ब्लैक होता है. यस. See, at least see whatever the drugs we have been discussing today, I think we have heard these drugs many times. But at least you have to see when you look at that drug, at least you have to identify what is the indication. Okay, किस लिए हम use कर रहे हैं वो drug. So this is the first thing. Indication तो पता होना चाहिए, please. Right? A little bit of the counseling part. Okay, so we will end this discussion here and we'll meet tomorrow. So thank you so much, guys, for your patience. Which topic, sir, tomorrow? Yeah, please. Which topic tomorrow? Yeah. So the same topic, and we'll have some. We are having few more drugs related to OTC. We'll finish that and we'll do MCQs related to OTC medications. Okay. Yeah. Okay. So thank you. Thank you, sir.